Assalamu alaikum students. In our last lecture we have covered different arbitrage opportunities and different types of arbitrage. Let's review this lecture and then we will move on to the IRB concept, which is quite opposite to this one, but let's go for the arbitrage criteria first. What is arbitrage? Arbitrage is something where there is a difference between the quoted prices in two currencies. Say for example, in one location the arbitrage opportunity can be developed if the price in one bank is different from the ask price in another bank. So there are three types of arbitrage which we had covered. First is locational arbitrage. Say for example, not only individual but banks can also take the benefit of arbitrage opportunities where they will find that locational arbitrage is available. In that case, if the bid price of bank A is different from the ask price of bank B, then you can go for the arbitrage opportunity. It means that there is a possibility that by using that difference or differential, you can capitalize on your profits. Triangular arbitrage, where we discussed that three currencies can be involved. One is your base currency and two of them are your cross currencies. In that case, if, for example, you are talking about US dollars, so in America, US dollar would be the base currency and any other two currencies would be referred to as your cross currency. So in that case, if triangular arbitrage is available, that means there is some discrepancy among the cross rates of exchange rate between the other two currencies in America. By having the triangular, if you find any discrepancy among the exchange rate, so you can find that you can generate your profits on the basis of that arbitrage opportunity. Finally, we discussed in detail that was the covered interest rate arbitrage. That is, as I told you earlier, that since the name is covered interest, so there are two terms involved in it. One is your interest and the other one is covered. Interest means that if you can find some differential in two interest rates between two different countries. So for example, we are talking about the US and UK example, that if UK is giving you the profit rate or the interest rate of 4% on their bank deposit, while the US is offering you 2%. Obviously, being an investor, what you're gonna do is you will like to take your investment in UK's bank deposit. For your arbitrage opportunity, there are two terms. One is interest rate and the other one is covered. Interest rate, okay fine, since you are satisfied कि America में bank interest rate कम है और UK में ज़्यादा है and you are investing it there. One thing, because you have to convert your currency, which is American currency dollars, into UK's currency, which is pounds. So day one पे तो आपका spot rate apply हो जाएगा. उस स्पॉट रेट को यूज करके आपने करेंसी को कन्वर्ट किया और यूके के बैंक डिपॉजिट्स करा दिए फॉर वट एवर लेंथ ऑफ टाइम यू वांट टू से. फॉर एग्जांपल 3 मंथ है या 6 मंथ्स है. आफ्टर 90 डेज यू विल गेट योर प्रॉफिट्स. दैट मीन्स वो जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल था, यू हैव कैपिटलाइज्ड ऑन इट. बट अगेन देयर इज अ टर्म कवर्ड कि 90 डेज के बाद अब जब पाउंड्स को वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल फेस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस. In that case, you will cover yourself against interest rate, against exchange rate fluctuations. So what you will do is you will buy or you will sign a contract in which you will sell pounds after 90 days by this price. So when you are sure that after 90 days the price for the pound would be the mentioned in the contract, so that means you are safe because you have agreed on that price and you are ready to convert the pounds into dollars back in 90 days time at that particular price. So when you are talking about the covered interest arbitrage, so this is somewhere where you are basically considering two criteria. One, the differential between two interest rate in two different countries. Second, you are trying to cover yourself against any type of exchange rate fluctuation. So you are trying to sell pounds in future time in forward contract for the particular price whatever you have agreed upon. And the examples which we have done where the spot rate was equal to the forward rate, like you bought the dollars at whatever price it was at the spot market and then you took the forward contract with the same price in forward contract after 90 days. So you are trying to get the benefit by using that criteria. So let's move on to today's lecture.
First, we have to discuss the interest rate parity concept. As a result of market forces, the forward rate differs from the spot rate by an amount that sufficiently offsets the interest rate differential between two currencies. तो अभी जो हमने बात की कि interest rate differential की possibility है and you can capitalize on it, which is your covered interest arbitrage. अगर वो opportunity available है, then you can go for the covered interest rate arbitrage. However, ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, अगर फॉरवर्ड रेट डिफर करता है फ्रॉम स्पॉट रेट, जैसे हमने पिछली तमाम एग्जांपल्स जो न्यूमेरिकल्स भी किए उसमें हमने देखा कि हमारा स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट सेम था. सो इट मीन्स कि आपका स्पॉट रेट जो आपने से फॉर एग्जांपल वट एवर प्राइस यू हैव बॉट और यू हैव कन्वर्टेड डॉलर्स इनटू पाउंड्स, आपको 90 डेज के बाद भी वही मिल रहा है. सो इट मीन्स देयर इज नो पॉइंट कि आपको कोई रिस्क इन्वॉल्व है. हाउएवर इन एक्चुअल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो स्पॉट रेट है और जो फॉरवर्ड रेट है उसमें डिफरेंस हो. अब उस डिफरेंस को आपने कंसीडर करना है कि वो डिफरेंस कितना ज्यादा है, बिकॉज अगर वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है देन इट इज गोइंग टू ऑफसेट योर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल प्रॉफिट. तो आपको जो इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस से प्रॉफिट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल जो 2 और 4% का डिफरेंस था, वो तभी अचीवेबल होगा जब आपका स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट सेम है. अगर फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट डिफरेंट है एंड से फॉर एग्जांपल आज आपने डॉलर कन्वर्ट किए हैं इनटू पाउंड्स एट 1.60 और कल आप हायर प्राइस पे कन्वर्ट करते हैं, सो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट का मार्जिन कम हो रहा है. सो इन दैट केस इट विल ऑफसेट योर प्रॉफिट्स. Then covered interest arbitrage is no longer feasible. So obviously अगर आपका spot rate और forward rate में difference ज्यादा है, इतना ज्यादा कि आपके 2 और 4% के interest rate differential को वो cover नहीं कर सकता, so that means covered interest arbitrage feasible नहीं है and the equilibrium state has been achieved. So इस केस में आपने बेसिकली अचीव कर लिया इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द मार्केट, बिकॉज आपका स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट डिफरेंट है. एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के लिए जो आपने स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट को सेम कंसिडर किया था, दैट इज नॉट द केस नाउ. दे आर डिफरेंट इन रियलिटी. प्लस आपका जो वो एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन का चांस था वो तो अवॉइड हो गया, बट ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट रेट जो 2 to 4% का था वो बेनिफिट भी उसमें आपका बेनिफिट अचीव नहीं होगा. क्यों? बिकॉज इसको क्लियरली वे में इस तरह से ले सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड करेगी. दैट मीन्स कि आपके इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो आपका बेनिफिट 2% का हो रहा था वो सिर्फ इस वजह से बिकॉज आपका जो रिटर्न का रेशो था जिस टाइम पे आपने वापस डॉलर्स को या वापस पाउंड्स को डॉलर में कन्वर्ट करना था, तब आपका स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट सेम था. अब अगर ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट सेम नहीं है, इट मींस मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ गई है एंड दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी. सो इट इज क्वाइट ऑपोजिट टू योर कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज, बिकॉज कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज में आपके पास वो कंडीशंस अवेलेबल हैं बाय यूजिंग व्हिच यू कैन जनरेट योर प्रॉफिट्स. हाउएवर इन इंटरेस्ट रेट पैरिटी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट. Once market forces cause interest rates and exchange rates to adjust such that covered interest arbitrage is no longer feasible, there is an equilibrium state referred to as interest rate parity. तो अगर आपकी मार्केट फोर्सेस इन्वॉल्व हैं जो कि आपके इंटरेस्ट रेट को और एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करती हैं, which obviously जो important factor है for covered interest arbitrage, that is then no longer feasible. क्योंकि मार्केट फोर्सेस अगर अवेलेबल हैं तो ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ये एडजस्ट कर जाएंगे टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन इंटरेस्ट रेट पैरिटी विल होल्ड. इन इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड रेट डिफर्स फ्रॉम द स्पॉट रेट बाय अ सफिशिएंट अमाउंट टू ऑफसेट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू करेंसीज. So now this is the point which is completely opposite to your criteria where covered interest arbitrage is available कि equilibrium position में forward rate differ करता है, different होता है from spot rate. तो अगर आपका future का जो forward rate है that is different from spot rate, so that will offset your benefit which you are getting from the differential of interest rate in two currencies. सो इट मीन्स कि आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में वापस प्राइसेस वापस कंडीशन नॉर्मल तरफ पे आ जाती है और वापस इक्विलिब्रियम साइड पे आ जाता है. सो लेट्स सी हाउ टू डिराइव इंटरेस्ट रेट पैरिटी, बिकॉज अर्लियर वी सेड दैट आपका स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट विल बी
same. Now in interest rate parity, since the market is in equilibrium state, and when the market is in equilibrium state, that means कि आपके spot rate or forward rate would be different. And in case the spot rate and market rate are different or forward rate are different, what will happen? That the market will come back to its equilibrium point, plus जो आपको interest rate differential से benefit achieve हो रहा था, now you are not gonna get that benefit. Now let's see the derivation of interest rate parity, where end value of $1 investment in the home country is equals to 1 plus interest rate of home country. So अगर आपने interest rate parity को check करना है, so these are the term which are important, कि आपके जो end of $1 investment है in home country, that will give you 1 plus interest rate of home currency. And equating the two rearranging terms, so you will get जो आपका फॉरवर्ड का जो प्रीमियम है, जो फॉरवर्ड का जो डिफरेंस है, बेसिकली जो फॉरवर्ड रेट का, यू कैन गेट इट फ्रॉम कि आपके पास P इज इक्वल टू फॉरवर्ड प्रीमियम. सो दिस इज P, वेयर यू टेक 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ होम कंट्री और होम करेंसी एंड 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ foreign country and minus 1. By using this formula, you can calculate the forward premium, because earlier you were saying that your spot rate was equal to forward rate. However, in this case, you are trying to find the premium, where you are saying that forward premium is equal to 1 plus home interest rate divided by 1 plus foreign interest rate minus 1. That will give you the forward premium by which you can derive the interest rate parity. Assume, let's take an example for forward premium. Assume that the Mexican peso, which is Mexican currency, exhibit a 6-month interest rate of 6%, while the US dollar exhibit a 6-month interest rate of 5%. From a US investor perspective, the US dollar is the home currency. According to IRP, interest rate parity, the forward rate premium of the peso with respect to US dollar should be, now you have to calculate, first of all, forward premium and then 6 months forward rate. Let's go for the forward premium and we'll find that how you can find the forward premium, by which आप statement को एक दफा दोबारा देख लें कि US dollar is the home currency. According to IRP, the forward premium rate of peso you have to find, right? And आपको rates mention कर दिए हैं कि आपके foreign कितने आपको interest rate offer कर रहे हैं और domestic आपका interest rate क्या है. So let's see. By using the same formula which is given here in this slide, P equals to 1 plus IH divided by that is the formula for forward premium, where P equals to forward premium. So you have to find P, where आपका जो इंटरेस्ट रेट होम करेंसी है 5% है, interest rate for foreign 6% is given. So just plug the values and you will get 1 plus 0.05 is because आपका interest rate on foreign currency जो है वो आपका foreign ये है -1 and let's find the values. आप भी कैलकुलेट करें और देखें आपकी वैल्यूज इन वैल्यूज से मैच करती हैं या नहीं. $1.05 divided by 1.06
minus 1. So that gives you the value equals to 0.0094, and it is a negative value, or you can call it negative 0.94%. So your forward premium is negative 0.94%, which we have found by using the formula which we have done. P equals to 1 plus IH, which is the home currency or home interest rate, and 1 plus IF, which is interest rate of foreign country. So you apply this and you are getting minus 0.94%. Let's see, what does that mean? Thus the peso should exhibit a forward discount of 0.94%. This implies that the US investor would receive 0.94% less when selling pesos 6 months from now. Based on a forward sale, then the price they pay for peso today at the spot rate. Such a discount would offset the interest rate advantage of the peso. If the peso's spot rate is $0.10, a forward discount of 0.94% means that the 6-month forward rate is, let's calculate that one also, कि आपका basically इसमें ये है कि जब आपने calculate की values for your forward premium, it was coming in negative 0.94. So that means you are not better off, while your जो आप डिफरेंशियल फाइंड करना चाह रहे थे और या फिर आप प्रॉफिट लेना चाह रहे थे इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, वो ऑफसेट हो जाएगा, बिकॉज आपकी जो फॉरवर्ड प्रीमियम की वैल्यू आ रही है दैट इज इन नेगेटिव. So negative 0.94% means कि US investor would receive 0.94% less when selling pesos for 6 months from now. So let's calculate the forward rate. So let's say that the spot rate for pesos is given as $0.10. Now this is the spot rate for pesos, Mexican currency, and we have to find the forward rate. So how would you do that? The forward discount rate which we have calculated is negative 0.94%. You need to find six months forward rate. What you will do is, the formula for forward rate is F equals to S into 1 plus P, where F equals to forward rate, S equals to spot rate, P equals to forward premium. So finally you will get F equals to spot rate is given as $0.10, 1 प्लस P आपके पास जो आपने पिछली साइड पे भी कैलकुलेट किया था माइनस 0.094% है, विच यू कन्वर्ट इट, अगर आप 0.94 डिवाइडेड बाय 100 करें, सो ये वैल्यू हम यहाँ प्लग करेंगे बिकॉज दिस इज माइनस 0.0094. So let's see, 0.10 आपके पास स्पॉट रेट अवेलेबल है फॉर पेसोस. फॉर्मूला में P आपका है फॉरवर्ड प्रीमियम विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन आवर प्रीवियस स्लाइड, which is negative 0.94% divided by 100, because when you are plugging it into the formula, so you have to convert it. So आपके पास decimals में आनी चाहिए value, so this is 0.10 times 1 minus 0.0094. अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें और देखें आपके पास क्या वैल्यू आ रही है. I have received 0.0
9906. So this is the value for your forward rate. So first of all आपने forward premium find किया था in your previous slide where we found कि आपके पास home currency और foreign currency में कितना difference available है and whether it is feasible to go for the or whether it is feasible for IRP or not, and then forward rate is involved. By using the forward rate you can find how much benefit you can get or not. So forward rate में आपके पास आ रहा है since you were in your discount rate जो पिछली slides में हमने calculate किया है, जो premium calculate किया that was -94%. 6 months forward rate calculate करने के लिए आपको forward rate का formula apply करना है which is this one, F equals to spot rate times 1 plus forward premium. So आपके पास spot rate was given as $0.10. You have plugged that value and then premium is given as this one which you have calculated already from previous slide. Plug करें and then you see what is the actual forward rate of the currency and whether it is feasible or not. Now relationship between forward premium and interest rate differential. So obviously forward premium का और interest rate differential का एक important concept है which is important in this interest rate parity concept because you are trying to capitalize for the thing that if you can get some benefit out of interest rate differential. Now let's see. The larger the degree by which foreign interest rates exceeds the home interest rates, the larger will be the forward discount of the foreign currency specified by IRP formula. तो according to IRP formula अगर आपके पास foreign interest rate में difference ज़्यादा है या differential बहुत ज़्यादा है then forward discount rate भी ज़्यादा होगा. If the foreign interest rate is less than the home interest rate, जो कि आपके foreign किसी country में, for example आप US economy की बात करें, आप US national हैं, तो आपके लिए if the foreign interest rate is less than the home interest rate, say for example pounds पर जो interest rate है that is less than the US dollar interest rate, the IRP relationship suggests that the forward rate should exhibit a premium. So अगर तो आप डोमेस्टिक और फॉरेन कंट्री की बात करती हैं और इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, इन दैट केस IRP रिलेशनशिप सजेस्ट के फॉरवर्ड रेट शुड एग्जिबिट अ प्रीमियम इन केस इफ फॉरेन इंटरेस्ट रेट इज लेस देन द होम इंटरेस्ट रेट या डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट. तो अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बड़ा है या ज्यादा है देन योर फॉरेन इंटरेस्ट रेट, देन इन दैट केस IRP सजेस्ट दैट फॉरवर्ड रेट शुड एग्जिबिट अ प्रीमियम. What are the implications in this? That if forward premium is equal to the interest rate differential, तो अगर तो आपका forward rate का जो premium है या forward rate से जो difference आ रहा है या जो benefit आ रहा है वो interest rate differential के equal है, then covered interest arbitrage will not be feasible. So it's quite obvious कि अगर आपके पास interest rate differential जो है उसमें और forward rate premium में difference ज़्यादा नहीं आ रहा, so there is no use to go for the covered interest rate arbitrage, because covered interest arbitrage is something which we have discussed already कि आप generate करते हैं arbitrage on the basis of differential in interest rates. तो अगर तो interest rate में differential है but on the other side आपके interest rate में differentials के साथ साथ आपका forward premium जो है that is also equal to forward interest rate. So जब हम बात करते हैं interest rate differential की, so in case when interest rate differential as explained above कि अगर interest rate differential जो है वो equal है आपके forward rate premium के, so जब ये दोनों equal हो जाएंगे so obviously there is no benefit out of it, so you don't need to go for the covered interest arbitrage because in that case you won't be able to make too much profits. So you have to consider it in your mind कि interest rate differential के साथ साथ it shouldn't be, interest rate differential should not be equal to forward premium because in that case you won't be able to make your profits. When interest rate parity exists, it does not mean that both local and foreign investors will earn the same returns.
सो जब आपकी इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड होती है, सो इट डजंट मीन कि आपके लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर सेम अर्निंग्स करते हैं, बिकॉज आपकी प्राइसेस या आपके डिफरेंशियल सब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं. इन दैट केस इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कंट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम हो. इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी डिफरेंट, but interest rate parity exists, so it does not mean that both local या foreign investor will earn same returns. What it means is that investors cannot use covered interest arbitrage to achieve higher returns than those achievable in their respective home countries. So this criteria means that investor won't be able to get more benefits out of your covered interest arbitrage to achieve their higher returns which they are expecting from covered interest arbitrage. Higher returns in a sense because they know that there will be a difference between the interest rates and then they will cover themselves with the forward rates. So in this case, when it will be equal, so obviously there is no possibility for covered interest arbitrage, but it can be possible that they can achieve profits from their home countries. Interest rate parity does not imply that investors from different countries will earn same returns. It is focused on the comparison of a foreign investment and domestic investment in risk-free interest-bearing securities by particular investor. So it is focused for the comparison of the foreign investment and domestic में भी आपको risk free interest bearing securities can be available for a particular investor. यहाँ तक तो हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया कि आपके इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी कब एग्जिस्ट करती है, विच इज लिंक्ड विद कवर्ड इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज. जब कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज होल्ड नहीं करेगा देन IRP विल होल्ड. Because in case of covered interest arbitrage, if the opportunities are not available in terms कि आपके जो interest rate differential है वो forward premium के equal हो जाते हैं, then obviously there is no use for getting it or to go for the covered interest arbitrage. Or that means when IRP holds, so the market is in equilibrium state. Now there are so many empirical studies done. Empirical studies वो हैं जो कि analysis के through check करती हैं whether IRP generally holds or not. So as discussed that the empirical studies indicate that IRP generally holds. So that means that there is a possibility through the data analysis or through different estimation techniques, it has been noticed that IRP generally holds, because in that case the market would be in equilibrium position. While there are deviations from IRP also, so they are often not large enough to make covered interest rate arbitrage worthwhile. So due to the different empirical studies, it has been observed कि IRP तो exist करता है, which means the market is in equilibrium condition. Sometimes these conditions can deviate, but they don't deviate to that extent कि जहाँ पे आप ये consider करें कि covered interest arbitrage की बहुत ज़्यादा facilities या बहुत ज़्यादा opportunities generate हो सकती हैं. तो IRP तो exist करेगा, बट अगर IRP एग्जिस्ट नहीं कर रहा और थोड़ी बहुत डिविएशन हो रही है, दैट मीन्स कवर्ड इतनी ज्यादा डिविएशन नहीं है कि आप कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज की तरफ जा सकें. दिस इज ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट सच एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पॉलिटिकल कॉस्ट एंड टैक्स डिफरेंशियल लॉज. सो हम जब बात करते हैं कि आप जब बात करें कि IRP होल्ड करेगा या नहीं होल्ड करेगा, IRP एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, सो IRP कैन एग्जिस्ट बट deviations are possible. And why these deviations are possible? That involves that due to the characteristic where we say transaction costs can be involved, political risks can be involved, and differential tax laws can be involved. So in that case, obviously, there is a possibility that due to different economic conditions or due to different types of scenarios, there is a possibility that IRP will hold or not. To determine conclusively whether interest rate parity holds, it is necessary to compare the forward rate or discount rate with interest rate quotations occurring at the same times. तो अगर तो आपने इंटरेस्ट रेट पैरिटी को चेक करना है कि वेदर इट होल्ड्स और नॉट, और आपने एनालिसिस करना है, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप क्या कंपेयर करेंगे कि आप फॉरवर्ड रेट या डिस्काउंट रेट विद इंटरेस्ट रेट कोटेशंस को मैच करें एट द सेम टाइम. सो दैट मीन्स बिकॉज आपने ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड कर रही है या नहीं. इंटरेस्ट रेट पैरिटी कब होल्ड करेगी? जब आपका फॉरवर्ड रेट वुड बी इक्वल टू योर डिफरेंशियल बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स. उस चीज के लिए आपको
टाइम टू टाइम अगर आपने एनालिसिस करना है, सो विद पैसेज ऑफ टाइम यू हैव टू कंसिडर फॉर द फॉरवर्ड रेट विद इंटरेस्ट रेट कोटेशंस। तो एक ही टाइम के ऊपर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स लें, उनके डिफरेंशियल्स चेक करें एंड देन कंपेयर देम विद फॉरवर्ड रेट्स, देन यू वुड बी एबल टू फाइंड कि वेदर IRP होल्ड्स और नॉट। बिकॉज हमने ये कहा कि IRP तब होल्ड करता है जब आपके फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मैच करते हैं या सेम हो जाते हैं, तब आपके पास ज्यादा बेनिफिट नहीं है, ऑब्वियसली आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, एंड यू कैन गो फॉर द इंटरेस्ट रेट पैरिटी because that exists into the market and you cannot go for the covered interest rate arbitrage. अब अगर आपने उसका डेटा एनालिसिस करना है या फिर आपने उसका कंक्लूजन देखना है कि वेदर रियली इट होल्ड्स और नॉट, आप डेटा के थ्रू फिगर्स के थ्रू कंसिडर करना चाहते हैं, देन व्हाट यू नीड टू डू इज कि फॉरवर्ड रेट से फॉर एग्जांपल आज का फॉरवर्ड रेट या आप आज के दिन में 90 डेज फॉरवर्ड रेट और टैक्स डिफरेंशियल को मैच कर लें एंड देन यू कैन सी वेदर इट होल्ड्स और नॉट IRP. If the forward rate and interest rate quotations do not reflect the same time of the day or of day, then results could be somewhat distorted. So obviously अगर आपका interest rate differential आप इस month का ले रहे हैं और forward rate next month का ले रहे हैं या previous month का ले रहे हैं, so there is no possibility कि आप उसमें IRP को check कर लें या आप देख सकें कि IRP hold करता है या नहीं. Because for IRP you have to focus on the criteria कि सेम टाइम पे आपने इंटरेस्ट रेट को भी लेना है और सेम टाइम पे आपने फॉरवर्ड रेट्स को भी कंसिडर करना है. दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स पे अगर आप दोनों वैल्यूज को लेंगे, सो ऑब्वियसली इट विल बी डिस्टॉर्टेड. Due to limitations in access to data, it is difficult to obtain quotations that reflect the same point in time. So we have observed that there is a possibility that you can see the differential between interest rate or interest rate values and the forward rate, and you have to compare them at the same point of time, but the data limitation is available over there, that there is sometimes it is not possible to get the same time data for both the variables. But if you want to see whether the IRP hold or not, then the criteria is that you should take both these values for the same time period, for the interest rates and for forward rates, because then you would be able to find whether there is arbitrage opportunity available or not. If interest rate parity does not hold, covered interest arbitrage deserves consideration. So अगर तो IRP है तो आपके covered interest arbitrage की facility would not be possible or would not be feasible. On the other hand, if IRP does not hold, then covered interest arbitrage deserves consideration कि आप उसको consider कर सकते हैं. Covered interest arbitrage still may not be worthwhile due to the various characteristics of foreign investment, including transaction cost, political cost, and differential tax laws. Even if IRP does not hold and you find the opportunity कि arbitrage facility is available in terms of covered interest arbitrage, still you can see कि आपके पास कुछ foreign factors या कुछ political factors या कुछ foreign investment characteristics available हैं, due to which there is a possibility कि आप covered interest arbitrage को achieve ना कर सके, and that include your transaction cost, political risk, and differential tax laws. Transaction cost, obviously, when you are investing your amounts, you are taking them from here, from your country and investing them in another country. So, transaction cost is a possibility which can be applied on it. In that case, obviously, there is a possibility that if huge transaction costs are involved, then even if IRP does not hold, you won't be able to go for the benefit from covered interest arbitrage. क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होगा दैट विल बी बेस्ड कि अगर आपके पास फॉरवर्ड रेट डिफरेंट नहीं है, स्पॉट रेट के साथ इक्वल है, देन यू आर गोइंग फॉर कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज. बट अगेन इफ इवन यू आर गेटिंग दैट टाइप ऑफ बेनिफिट फ्रॉम कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स आर हायर, व्हाट विल बी द केस? Obviously, you won't be willing to go for that type of transaction because you have to pay for that transaction, and in that case your benefit has been eliminated. On the other hand, political risk is also one thing which should be noticed. That is, a crisis in a country could cause its government to restrict any exchanges of the local currency for other currencies. So any type of crisis by which the country has restricted
to convert its currency in any other currency will be a criteria for political risk. We will discuss it in detail in our next slides. Investor may also perceive a higher default risk on foreign investments in this case. Plus differential tax laws, that if tax laws vary, after tax returns should be considered instead of before tax returns. So we will discuss it in detail now कि आपके differential tax laws जो हैं how they can have an impact over your covered interest arbitrage opportunity, because you cannot focus only on interest arbitrage or covered interest arbitrage. You have to focus on these some characteristics also when you are investing in some foreign country. So let's see the political risk, that even if the covered interest arbitrage appears feasible कि आप उसमें involve हो सकते हैं, after accounting for transaction cost, investing funds overseas is subject to political risks also. Even आपके पास आपको लग रहा है कि arbitrage opportunities available हैं, transaction costs आपकी इतनी नहीं हैं जिसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि arbitrage opportunities आप achieve कर सकते हैं, still there is a type of risk which is involved, that is called political risk, because you cannot predict the political condition of any other country. Through the forward contracts locks in the rate at which foreign funds should be reconverted, क्योंकि आपने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपने उनसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आफ्टर अ वाइल मे बी 90 डेज और 180 डेज 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद आप वापस इसको अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे. ड्यू टू द पॉलिटिकल रिस्क it is no guarantee that the foreign government will allow the funds to be reconverted. So there is a possibility कि आपका चलें सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, आप कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज की तरफ जा रहे हैं, आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट से सेटिस्फाइड हैं, आपका फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट जो है वो स्पॉट रेट के इक्वल है या फिर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि जो कि आपके प्रॉफिट्स को हर्ट करे, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट है it will have some type of political risk कि आपकी वापस करेंसी उसी रेट पर आपकी करेंसी में कन्वर्ट कर दे. A crisis in foreign country could cause its government to restrict any exchanges of the local currency for other currencies. So there is a possibility due to financial crisis in any country, foreign country restrict कर दे अपने country को for exchange of the currencies. In this case, the investors would be unable to use these funds until the foreign government eliminated the restrictions. Investors may also perceive a slight default risk on foreign investments such as foreign treasury bills, since they may not be assured that the foreign government will guarantee full repayment of interest and principal upon default. So इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये भी सोच सकते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट रिस्क इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपने टी बिल्स में लगाया है, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट की है, सिंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं दे वोंट गिव यू द फुल गारंटी ऑफ द रीपेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, कि अगर फॉरेन गवर्नमेंट डिफॉल्ट करती है या वो पे ऑफ नहीं कर सकती या उनके फंड्स इतने नहीं है कि वो आपको पे ऑफ करे, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके माइंड में ये रिस्क भी इन्वॉल्व हो कि आप क्योंकि फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हैं या आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट अगर उस कंट्री की गवर्नमेंट डिफॉल्ट करती है, सो व्हाट इज द गारंटी दैट दे विल रीपे यू द इंटरेस्ट रेट एंड द होल अमाउंट व्हिच यू हैव इन्वेस्टेड इन देयर कंट्री. Therefore, because of the concern that the foreign treasury bills may default, they may accept a lower interest rate on their treasury bills rather than engaging themselves in covered interest arbitrage in an effort to obtain a slightly higher expected return. So जो investors होते हैं जिनको इन तमाम strategies का idea है, जिनको ये भी पता है कि covered interest arbitrage किस तरह से attain करना है, अगर उनके mind में political unrest या political risk कि एक कंडीशन अवेलेबल है, then what will be the possibility? Then rather than going and investing in foreign country and getting slightly better off than your own country, you are putting yourself in a default risk of the foreign government. What you can do is कि accept the smaller profit from your domestic country, जिसमें आपको पता है कि आपके इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएंगे और in case of default आपकी गवर्नमेंट लायबल है कि वो आपको पे करेगी. So along with the covered interest arbitrage opportunities, even if they are available, अगर transaction costs ज़्यादा हैं, there is a possibility कि investor avoid करे इन तमाम transactions को, क्योंकि आपकी तमाम investment या जो arbitrage opportunities available हैं उसमें आपको
इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स जो हैं या फिर आपको जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ रही हैं. On the second criteria, where you think a transaction cost is bearable and you can bear them and you will invest in that. So again, there is a possibility that you think कि आप क्योंकि foreign country में invest कर रहे हैं और आपकी terms and conditions वही हैं जो foreign country के साथ आपकी dealing है, अगर उस country की government due to any reason default करती है, so what is the guarantee that they will repay you each and everything what you have invested? Plus, there is a possibility कि अगर due to some crisis the foreign country's government has been adopted a way where they have restricted the exchange rate transactions कि किसी भी currency का exchange नहीं होगा, what will happen in that case? Obviously, your investments would be in a risk. In that case, there is a possibility कि investors arbitrage opportunity को ना use करें, which is covered interest arbitrage opportunity, and they will go for the low returns by investing them in their domestic country. Finally, there is a possibility of differential in tax laws where we consider, because tax laws vary among countries, investors and firms that set up deposits in other countries must be aware of the existing tax laws. So, जब हम बात करते हैं किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने की और डिपॉजिट्स को किसी दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करने की, being an investor we must be aware of the tax laws कि आप जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन बैंक डिपॉजिट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके उन डिपॉजिट्स के ऊपर चार्ज हों इंटरेस्ट रेट्स या सॉरी टैक्सेस चार्ज हों. व्हाट विल हैपन इन दैट केस कि अगर तो टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, सो देयर इज नो यूज to take out money from your country, take it to the other country, go for the arbitrage opportunity in covered interest rate while you are paying a lot of taxes on that transaction. So there is a possibility that the investor would think in a way कि आपके differential tax laws जो हैं, which is quite different from your country, you are exposed towards the taxes and you have to bear the taxes which are imposed on your transactions or your investments in UK's bank deposits or any other bank deposits. Covered interest arbitrage might be feasible when considering before tax returns but not necessarily when considering after tax returns. Such a scenario would be due to the differential tax laws. Covered interest arbitrage आपको feel होता है कि would be feasible only in case जब आप देख लें कि वो before tax returns आप check कर रहे हैं. However, when you go for the after tax returns, there is a possibility that you will find that due to the differential tax laws, you are not getting any type of profit out of your arbitrage opportunities. So that can be another factor which is a point of concern for the investors. And let's review today's lecture. First thing, we have discussed the interest rate parity condition. Now, what is interest rate parity? Interest rate parity is completely opposite to the covered interest rate arbitrage opportunity. In case of covered interest arbitrage opportunity, you think that you can generate profits on the basis of having differential in tax rates in two different countries. Plus, you are thinking that the spot rate should be same with the forward rate. So, हमने जिस तरह डिस्कस किया कि आपके कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज क्या होगा, इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं. वन थिंग इज दैट यू विल हैव अ डिफरेंशियल ऑफ इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स कि अगर आप दो कंट्रीज में काम कर रहे हैं या दो कंट्रीज में एक कंट्री के आप नेशनल हैं और दूसरे कंट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. हमने एग्जाम्पल ली यूएस और यूके की इकोनॉमी की कि आप यूएस के नेशनल हैं और आप समझते हैं कि यूके की इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे हो रहा है ऑन दी बैंक डिपॉजिट. Your thinking is that you can convert your amount, which is in terms of dollars, into pounds, and you can invest it in British economy or British bank deposit. Plus, you want to save yourself from exchange rate fluctuation कि 90 days या 60 days या फिर आप कह लें कि 180 days के बाद जब आपका बैंक डिपॉजिट मैच्योर होगा और आपको प्रॉफिट्स मिल जाएंगे and you want to convert them back into dollars. So what will be the exchange rate at that time? अगर तो आप एक्सचेंज रेट रिस्क फेस कर रहे हैं दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप कोई प्रॉफिट जनरेट करें, देयर इजंट एनी पॉसिबिलिटी कि कोई प्रॉफिट आपको मिले. सो ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू लॉक और you would like to sell pounds for the forward.
with some specific rate and you will lock yourself in a contract के 90 days के बाद या जो भी टाइम फ्रेम है उसके बाद आप अपनी अमाउंट्स को वापस कन्वर्ट करेंगे into pounds या into dollars. In that case, there is a possibility कि आप profits generate कर सके. However, on the other hand, completely opposite, being having interest rate parity, this condition does not hold. कि आप covered interest arbitrage नहीं achieve कर सकते. Why? Because according to interest rate parity, अगर आपको interest rate differential achieve हो रहा है, but on the other hand, forward rate is not same with the spot rate. So what will happen कि आपने 3 महीने बाद जब अमाउंट को वापस कन्वर्ट करना है तो आपको जो फॉरवर्ड रेट मिला है that is quite higher. So there is no point कि आप इन्वेस्टमेंट करें इन कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज, बिकॉज जो आपके इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होगा वो कवर हो जाएगा दूसरी साइड पे जो आपका स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस है. इन दैट केस आपको कोई बेनिफिट इस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी से नहीं मिलेगा, और अगर ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है दैट कैन बी कॉल्ड दैट इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड्स. इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या है? इन दैट केस यू कंसिडर कि आपके पास मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है. So the market is basically in an equilibrium condition and you are thinking that there is no fluctuation even in interest rate, or there is no possibility that someone will get some benefit out of arbitrage opportunity. So that is called your interest rate parity. When you consider interest rate parity, obviously, so you have to go for 2 types of criteria where you have to consider कि आपके interest rate premiums क्या हैं या forward rate premiums क्या हैं. आप फॉरवर्ड रेट अप्लाई करके कितना बेनिफिट ले सकते हैं. प्लस यू कैन ऑल्सो गो फॉर दी बिकॉज व्हेन यू आर कंसिडरिंग दी फॉरवर्ड रेट प्रीमियम्स इन दिस केस व्हेन देयर आर 2 करेंसीज इन्वॉल्व, क्योंकि आपने एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना है, सो यू विल टेक द इंटरेस्ट रेट इन होम करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन करेंसी ऑल्सो, एंड देन यू विल फाइंड द फॉरवर्ड प्रीमियम कि आपको कितना बेनिफिट हो सकता है ड्यू टू this transaction. On the other hand, you can also find the forward rates which can be found by using the formula which we have done, F equals to spot rate times 1 plus P, which is your forward premium. तो forward premium calculate करने के लिए जब आप उसको forward rate के formula में plug करेंगे by applying the spot rate also, then you would find कि आपकी investment feasible है या नहीं, और ऑन दी अदर हैंड इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड करती है या नहीं. सो अगर तो आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड करेगी दैट मींस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है. अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड नहीं करती दैट मींस यू कैन गो फॉर द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बाय यूजिंग द कवर्ड इंटरेस्ट रेट. एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि इवन IRP डज नॉट होल्ड, and you have the opportunity कि you can go for the interest rate you can go for the arbitrage opportunity by using the covered interest rate arbitrage. What you can do is, first thing, there is a possibility कि अब जब आप transaction करने लगे due to you are investing your amount into foreign country, maybe transaction costs are involved. आपने फाइंड किया कि ओके फाइन आई एम गोइंग फॉर द कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, बट देन यू फाउंड के फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बेयर करनी पड़ेंगी, एंड इफ दोज ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर टू हाई दैट बेसिकली ऑफसेट द बेनिफिट ऑफ योर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, देन ऑब्वियसली देयर इज नो यूज फॉर गोइंग दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. तो एक चीज तो ये कि अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी नहीं भी होल्ड करती और आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी पे जाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, देन यू हैव टू कंसिडर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बहुत ज्यादा ना हो. सेकेंडली, we have also discussed the political risk, that there is a possibility that even if you are getting the covered interest arbitrage opportunity and interest rate parity does not hold, so what will happen? Since you are investing in a foreign country, there is a possibility that you cannot predict the political condition of that country. It means there is a possibility कि due to some reason वो country exchange करने से refuse कर दे after 90 days जब आपकी transaction complete हो रही है.
उस करेंसी को जो आपके अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं. So what will happen in that case? Obviously you are stuck. So there can be a possibility where investors are thinking in a way कि जब आप किसी foreign country में invest करते हैं based on the differential of the interest rate in your country and in the other country, there is a possibility that you can generate profits because spot rate or forward rate same है और you can generate enough profit whatever you want. But at the same time, because आप अपने amounts को lock कर रहे हैं for 3 months period or 6 months period in any other country जहाँ से आप profits achieve करना चाहते हैं, what will happen? In that case, there is a possibility due to political risk you won't be able to achieve benefit, while there is a possibility कि आपके amounts lock हो जाएं या आपके amounts stuck हो जाएं किसी दूसरे country में. Secondly, there is a possibility that due to some financial crisis or any other crisis, the government of that other country default. If you have invested in treasury bills, or treasury bills क्योंकि government की securities होती हैं, and since you have invested in those treasury bills for next 3 months, what will happen if the government defaults of that country? In that case, obviously, you are exposed to the political risks attached to that country कि अगर तो government default होती है and government does not repay you your amount, so what will happen? Because आप foreign country की बात कर रहे हैं, अगर वो country किसी default करता है या उसकी government default करती है, what is the guarantee कि after 3 months आपको उतना ही amount मिलेगा जितना आप deserve करते हैं, even the government defaults. Considering that thing, there is a possibility that the investor would be reluctant to basically go for the arbitrage opportunity in any other country, because अगर arbitrage opportunity available भी है किसी country में, what will happen or who will guarantee for the political risks? अगर government भी कुछ उसके ऊपर आपको further guarantee नहीं कर रही, so obviously there is no use to go for it. Finally, we also discussed the differential tax laws, जिसमें हमने बात की कि there is a possibility since you are investing your amounts in फॉरेन कंट्रीज, तो डोमेस्टिक कंट्री में और फॉरेन कंट्री में टैक्सेस में डिफरेंस हो. आपका कंट्री में भी आपके रिटर्न्स पर इतना टैक्स ना चार्ज करे जितना दूसरा कंट्री अपने रिटर्न्स पर या आपके रिटर्न्स पर चार्ज कर रहा है. व्हाट विल हैपन इन दैट केस? सो बिफोर गोइंग फॉर एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और बिफोर गोइंग फॉर एनी टाइप ऑफ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू सी कि ओके फाइन, आपके कंट्री में तो 2% है इंटरेस्ट रेट, दूसरे कंट्री में 4% है इंटरेस्ट रेट, आफ्टर 3 months या आफ्टर 6 months आपको प्रॉफिट्स मिलने हैं. व्हाट विल हैपन कि आपके अमाउंट्स जो कि आप समझ रहे हैं आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे उसमें से ह्यूज टैक्सेस डिडक्ट हो जाएं which you were basically not sure about them. So before going for that type of opportunity, you also have to focus on the tax rate differential. There is a possibility कि आपकी कंट्री में 1% टैक्स चार्ज होता हो, वहां पे 5% टैक्स चार्ज होता हो. So rather than getting benefit, you are in loss actually. So आपके differential tax laws are very much important when you are going for any type of arbitrage opportunity, because in that case you can consider कि आपने कितना profit generate किया है और नहीं किया. So these are some criteria by which you can go. First thing, if you are trying to go for investment in any other country, first thing, if you can find any covered interest arbitrage, you need to focus on the transaction cost. Okay, okay fine, आप foreign country में जा रहे हैं, but what happens if they are charging you a lot of transaction costs? एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए. दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस कंट्री के पॉलिटिकल सिनेरियोस क्या हैं या पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं, एंड वेदर दे आर ऑफरिंग यू सम टाइप ऑफ गारंटी और नॉट for any type of default by the government or any type of financial crisis if they will face. So in that case, you have to save yourself from that also, that if you are investing any other country, in any other country, you have to consider the transaction cost, the political risk, and finally the differential in tax laws कि आपके कंट्री में और उस कंट्री में टैक्सेस में कितना डिफरेंस है. ये ना हो कि फाइनली जब आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं, you are so happy that you will get 2% extra return as compared to your own country, while when you are gonna pay the taxes, you will find that you are in loss with -3% or -4%. So what will be your profit then? So when you are going for any type of arbitrage opportunity, especially covered interest arbitrage opportunity, since you have to go step by step, you have to convert your currency into other currency, then you have to invest in foreign banks, and then you have to convert them back into your currency, you have to focus on these characteristics also.
You cannot ignore these facts and go for straight away for the transactions or straight away for the investment, because in that case there is a possibility that rather than getting benefits, you are putting yourself in a pressure or you are putting yourself in a crisis. So we have covered interest rate parity and different types of arbitrage opportunities. In next class, we will focus on exchange rate risk management. Till then, thank you and Allah Hafiz.